9:15. We have some breaking news coming in from right here in the Delhi-NCR. I believe that as we speak, searches are taking place across Delhi. This is in relation to the liquor excise policy. You'll remember the Delhi government had just a few weeks ago rescinded its alcohol excise policy. It had wanted to shift the liquor regime in the entire NCR region from a government-run one to a private one. They then rescinded that entire policy, leading to the BJP, which is the opposition in the Delhi-NCR, saying that the excise policy was being used to get money from private individuals. Now we're learning, as you can see, of the ED conducting massive searches across the Delhi-NCR. Let's go over to my colleague Ashish to understand more. Ashish, I believe it was the CBI earlier that had visited Manish Sisodia's house and a number of other locations across the capital. Now I believe the ED is taking action. Could you bring us more details, please? So as we speak, what we are being told, it's not only Delhi, it's almost all over India. We are hearing that searches are happening in Lucknow, searches are happening in Gurugram, searches are happening in South India as well. So, massive searches, more than 30 locations. That is what we are being told as of now by our sources, that more than 30 locations are being raided by the Enforcement Directorate. But interestingly, Manish Sisodia is not being covered. So the official residence of Manish Sisodia or his personal residence is not being raided as of now, but people related to the liquor policy who might have benefited out of the entire alleged scam, they are basically being raided. So the Enforcement Directorate is basically keeping the politics aside. They're basically looking at who actually are the beneficiaries of the proceeds of crime. So here obviously the Delhi government, especially Deputy Chief Minister Manish Sisodia, has said that CBI has given a clean sheet, ED will also raid, whatever he would say. But as of now, what we speak, when we are speaking, one thing that we can confirm is that ED is conducting massive searches all over India, and this is basically related to the excise policy, the Delhi liquor excise policy. They're looking at the proceeds of crime. They're basically looking at who are the final beneficiaries of the alleged scam, and that is why these searches are being conducted. Okay, Ashish, what details can you share about those who are being raided right now? Could you share with us more details about how the ED is, for example, deciding who it is that benefited and whose residences and offices to raid as we speak? So it's very difficult to comment as of now, because we got a little idea about these searches right at around 7:15 in the morning, but nobody was ready to confirm in Enforcement Directorate what these searches are all about. We got to know that there was massive CRPF movement, paramilitary forces movement, and then we basically were trying to call various sources in the Enforcement Directorate, and everybody was absolutely tight-lipped until unless somebody, one of the sources finally decided that yes, the searches are happening. The searches are being conducted by a very special division in the Enforcement Directorate. There's a division called Special Task Force, STF, which is headed by a senior IPS officer, and this officer is basically assigned for special tasks to conduct special investigations. So here what we are being told is that this STF is basically conducting searches. Huge team of ED is basically on the field as of now. Search has been started at around 7 in the morning. The companies that we are talking about, or the locations that we are talking about, looks to be too early to comment, but we can only anticipate. It seems to be that there are companies who have finally benefited out of the entire scam. Ashish, just stay with us, please. I do want to come back to you in a second. My colleague Shankar Anand is actually with us on the ground from one of the raid locations as we speak. This is right here in the... मेरे पे आओ। हाँ, जल्दी। इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, इस वक्त में ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं 207 महेंद्रो। ये देखिए, यहाँ पर ईडी के अधिकारी अंदर जाते हुए जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने की बात आ रही है, और अभी फिलहाल देखिए ईडी के अधिकारी अंदर जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स कुछ लेकर जा रहे हैं, और अंदर जाने के बाद देखिए बेल बजाते हुए, और जिस तरह से अगर आबकारी नीति के बारे में अगर बात करें तो अगस्त महीने में 17 अगस्त को एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया था सीबीआई के द्वारा, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था सीबीआई के द्वारा। उसके बाद उसी मामले को आधार बनाते हुए अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस केस को रजिस्टर्ड किया है
और इस केस को टेक ओवर करने के बाद अब कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ये अगर देखा जाए तो ये समीर महेंद्रू का आवास है, समीर महेंद्रू का आवास। और यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम पहुंची है और इस वक्त में तकरीबन 9:20 हुए हैं और इस वक्त में ईडी के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। और कहा जाए जिस तरह से तमाम मामलों की अगर बात कहा जाए तो जिस तरह से आबकारी नीति और आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति है, इस मामले में जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम देने का मामला सामने आया था और इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने जिस तरह से एफआईआर रजिस्टर किया था, उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने आज तकरीबन 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दी है। देखिए ये समीर महेंद्रू का आवास है, जोरबाग स्थित 207 नंबर। ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और ईडी के अधिकारी और इसके साथ साथ अन्य अधिकारियों की अगर बात करें तो इस मामले में 16 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें कि आरोपी नंबर 1 थे मनीष सिसोदिया। हालांकि हमारे सूत्र आज बताते हैं कि आज मनीष सिसोदिया के आवास पर सर्च ऑपरेशन नहीं है, बल्कि आबकारी नीति को अंजाम देने में जो फर्जीवाड़े को जिसने अंजाम दिया था उससे जुड़े हुए कई आरोपियों के आवास पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट All right, Sameer Mahindru, as you can see his house on your screens right now being raided by the ED. But it's important to note that there was one point where Mahindru was actually one of the CBI's key witnesses in a case in 2013, where he was a key witness against 2 infrastructure and development officials convicted for graft all the way back in 2013. He's the managing director of Indo-Spirit and he is being probed by the CBI for alleged bribery to influence Delhi's excise policy. This was something that actually came forward all the way back in August earlier in the month. Let's go to my colleague Shankar Anand. He's with us, as you can see right now, live from the ground right now. We'll go to him to get more details. Shankar जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शंकर जी, आप हमारे दर्शक को समझा सकते हैं ये जो समीर महेंद्रू हैं जिनके घर में अभी ये ईडी की जांच चल रही है, इनके बारे में आप हमें और बता सकते हैं प्लीज? देखिए 17 अगस्त को जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा आबकारी नीति में एफआईआर रजिस्टर किया गया था, तो उस एफआईआर में 16 लोगों का नाम है, जिसमें कि एक नाम है समीर महेंद्रू। और इस वक्त में जो साउथ दिल्ली स्थित जो समीर महेंद्रू के आवास पर है, ये जोरबाग स्थित है। और अगर देखा जाए, ये देखिए आवास है। और अगर पूरे इस मामले की बात किया जाए तो जिस तरह से आबकारी नीति में कई लोगों का नाम बाकायदा आरोपी बनाया गया था, जिसमें कि 16 जो लोग हैं उसमें समीर महेंद्रू भी है। और इस जो सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर था, उसी एफआईआर को ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया और ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आज सुबह तकरीबन 6 से 7 बजे के लगभग में ईडी की टीम यहां पे पहुंची और तकरीबन इस वक्त में 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, एनसीआर, इसके साथ साथ गुरुग्राम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुंबई, इन तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जिस तरह से इस मामले में कई प्रमुख जो आरोपियों की अगर बात करें तो हालांकि इस मामले में मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन आज सर्च ऑपरेशन मनीष सिसोदिया के आवास पर नहीं है। हालांकि जिस तरह से एफआईआर नेम्ड जरूर है, लेकिन इस मामले में कई प्रमुख आरोपी हैं, उनके यहाँ पर आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर कहा जाए ईडी के द्वारा जिस तरह से इस केस को टेक ओवर किया गया और इस मामले में जो जिस तरह से जानकारी मिली कि आबकारी नीति से जुड़े मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले में देखिए अभी हालांकि कमरे को बंद कर दिया गया है। इस मामले में अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और जिस तरह से इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो इस मामले में कई प्रमुख आरोपियों के यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर पहले की अगर बात करें तो जिस तरह से पहले जो सीबीआई के द्वारा जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, तो उस वक्त में भी कई प्रमुख आरोपियों के यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और आज देखना लाजमी होगा कि आज आबकारी नीति से जुड़े हुए कई ऐसे बिचौलिए और कई ऐसे जो अधिकारी हैं, जो पूर्व अधिकारी हैं, उनके यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान बाकायदा कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से इस पूरे आबकारी नीति को प्रभावित किया गया, किस तरह से इस